So good morning students, welcome to my channel Common Sense Explore. Today I will explain about the topic eigenvalues and eigenvector. First of all, you need to know what is characteristic equation. Characteristic equation characterize the system of linear equation. Okay, so now if you calculate the roots of characteristic equation, this is nothing but the eigenvalue. So eigenvalue can be also written as the roots of characteristics equation. Roots of characteristics equation is also known as eigenvalues, or it is also sometimes called proper values. Okay, so it is sometimes called proper value or real value. Okay, so eigenvalues how to calculate, in इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे eigenvalues और eigenvector निकलते हैं. ठीक है, सपोज ए मैट्रिक्स A of n cross n matrix means square matrix, and another matrix identity matrix is also n cross n matrix. Okay, so two matrix, one is identity matrix, another A matrix. So characteristics equation can be written as characteristics equation. Please remember, equation can be written as A minus lambda I mod. Mod means determinant. Okay, so the determinant of A minus lambda I equals to 0. This is known as the roots or characteristic equation. If you calculate the root of this characteristics equation, automatically eigenvalues will be calculated. Please remember, if A minus lambda I multiplied with x equals to 0, this equation is known as the eigenvector. Please remember, this equation is known as eigenvector. Okay, means with the help of lambda you have to calculate the lambda, where lambda is a parameter or eigenvalues. Okay, so first of all, the first property is the sum of eigenvalues equals to sum of elements in principal diagonal of a matrix. Principal diagonal element of a matrix. Suppose a matrix is written as 2 3 1 1 2 5 and 1 1 5. This is a matrix. So now from here, if you calculate the sum of the eigenvalues, that is nothing but the sum of the principal diagonal element. So that means sum is nothing but 5 plus 2 plus 2, that means 9. Okay, this is the first property. And the second property, you can say the product means multiplication of eigenvalues equals to determinant of the matrix. ठीक है, so अगर एक मैट्रिक्स है ऐसे, सो प्रोडक्ट ऑफ इसका आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 2 8 minus 3 5 is the determinant. Suppose this question is asked to find the characteristics roots of the matrix of this matrix is given 3 cross 3 matrix. 3 cross 3 matrix is given. You have to characteristics root means you have to calculate the eigenvalues. How to calculate? By using this property, product of the eigenvalues equals to determinant. Product of the eigenvalues equals to determinant. So just there is an option is given for competitive exam how to solve this kind of problem. Just solve the determinant. Delta equals to, as I told you, the shortcut method, 6 minus 2 2 6 minus 2. Okay, then minus 2 3 minus 1 minus 2 and 3. Next 2 minus 1 3 2 minus 1. Okay, and the next part is the diagonal part. This diagonal first, and then this diagonal and this diagonal. Okay, write down in this way, 6 3 18 into 3 54. Now here minus minus plus 2 2 4, so plus 4. Okay, done. Now minus minus plus and 2 2 4 plus 4. Okay, done. Now this diagonal will be subtracted, 1 2 and 3. These three diagonals will be subtracted. Now 3 2 6 6 2 12 minus 12. Now minus minus plus, and this is 6, so it will be minus 6, and this is minus minus plus 2 2 4 4 3 12 minus 12. Okay, so now if you can solve it,
it is coming as 32. Now check in the options. So 32 is the determinant. As I told you, product of eigenvalues should be determinant. So find the characteristics root of the matrix. Which one is the characteristics matrix among these options? First of all, 3 into 3 into 6, because product means multiplication of the eigenvalues. These are the eigenvalues. 3 into 3 into 6, 3 into 3, 9, 9, 6, 54. It is coming 32. That means this one is incorrect. Next one, 2 into 2 into 8, 8 to 16, 16 into 2 is 32. That means option B is correct. Okay, so this is how you have to solve that. The as per this second property, product of the eigenvalues equals to determinant. Just solve the determinant and you can able to calculate with the options. Okay, this is important for basically for a competitive exam. Third property, you can say the eigenvalues of a symmetric matrix. For a symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिखते हैं? ए का ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. द आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई एम राइटिंग हियर आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए रियल. ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? आइदर तो इमेजिनरी होता है, रियल तो कभी नहीं होता है. ठीक है, आइदर इमेजिनरी होता है और जीरो हो जाता है. ठीक है, फॉर ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इटसेल्फ है. सो प्रिंसिपल आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है ना, वही है तुम्हारा आइगन वैल्यूज. इसके लिए कैसे देखते हैं? जैसे कि यूटीएम एलटीएम कैसे निकलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सपोज आई एम फाइंडिंग दिस 1 0 0 2 5 0 4 1 6. Can you tell me it is upper triangular or lower triangular? दिस इज द मेन डायगोनल एलिमेंट. डायगोनल के ऊपर सब एलिमेंट देखो जीरो है, इसका मतलब दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, सो फॉर दिस लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर स्पेशल केस, दिस इज ए स्पेशल केस. फॉर दैट के पर्टिकुलर केस आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा? ये है आइगन वैल्यूज 1 5 एंड 6. मतलब अलग से निकलने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, 5, 6. दिस इज आइगन वैल्यूज. If the lambda is the eigenvalue of A, if lambda is eigenvalue of a matrix A, automatically lambda square is the eigenvalue of a matrix A square. Lambda cube is the eigenvalue of a matrix A cube. In this way, means A is a matrix. If you multiply A into A, that becomes A square. Automatically you can see lambda square will be the eigenvalue. Eigenvalue also will change. This is another property. So lambda to the power of n is the eigenvalue of a matrix A to the power of 10. Or you can say lambda to the power of -1 or 1 by lambda is the eigenvalue of A to the power of -1, मीन्स A इनवर्स. अगर इसका एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, सपोज यही मैट्रिक्स A है. ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स कर दोगे, इसका जो डायगोनल है 1 5 6 है, तो इसका मैट्रिक्स इनवर्स करने के बाद इसका देखना 1 बाई लैम्डा आएगा, मतलब 1 बाई 1, 1 बाई 5 एंड 1 बाई 6 आएगा. ठीक है, सो A इनवर्स का आइगन, अगर तुमको ए का आइगन वैल्यू पता है, लैम्डा है, तो ए इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई लैम्डा, मीन्स लैम्डा इनवर्स. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व